Hi friends, today I am going to discuss electrostatics first lecture, which is based on the charge. What is electric charge? First of all, we should deal about electric charge. What is electric charge? In this universe, all object consist the charge because all object consist electron, proton and atom. That's why all have the charge. But at the normal state, charge of the body will be zero. What is charge basically? Charge is a physical quantity or a basic entity which is responsible for the electrical interaction between the constituting particles. Let's see how will you remember the definition of charge by simplest way. When a body has deficiency of electron, deficiency means less electrons, and either you can say excess number of electrons from the normal due shear. It means, suppose that I have a body. At the normal state, total number of electrons are equal. That's why total charge is considered to be zero at the normal state. But when you do something just like conduction, friction or induction, body get charged. What do you mean by body get charged? Let's see, this is the body. It consists the charge by its ratio. It means if there are excess electrons, suppose that by rubbing, by induction, by conduction, if number of electrons get increased, body will be negatively charged. If there is a deficiency of electron, it means body has positive charge. When electrons, suppose that one body transfer the electron to other body, it means that body has positive charge. The body which will gain the electron, that has the negative charge. By this way you can charge the body, and body is said to be electrified. What is the unit of charge? You should remember, Coulomb is the scientist who first time demonstrated the nature of charge. That's why to give the honor to this scientist, Coulomb is the unit of charge. तो चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है? कूलम है. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लगने के लिए. किसमें? जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं. तो टोटल चार्ज जो है हमेशा जीरो होता है नॉर्मल स्टेट में. जब आप किसी बॉडी को चार्ज करने की कोशिश करेंगे, जैसे बाय रबिंग, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, तो उस बॉडी में जो है चार्ज आ जाते हैं. सपोज दैट इन सारे प्रोसेस से अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन की जो काउंटिंग है वो बढ़ जाती है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है. अगर उसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देता है, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी. अब बात होती है कि इस चार्ज को हम किस यूनिट से मेजर करेंगे? इस चार्ज को हम करेंगे कूलम से. कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने चार्ज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको दी थी, तो उसको ऑनर देने के लिए चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम. लेट्स सी बेसिक प्रॉपर्टीज. ये जो चार्ज होता है, इट कंसिस्ट सम बेसिक प्रॉपर्टी. व्हाट आर बेसिक प्रॉपर्टी? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड इनवेरियंस ऑफ चार्ज, फोर्थ एडिशन ऑफ चार्ज. वन बाय वन आई वांट टू डिस्कस ऑल दीज प्रॉपर्टीज. तो चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज एंड एडिशन ऑफ चार्ज. लेट्स सी व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कोई भी बॉडी हो, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में हो, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर हम टोटल चार्ज को रखेंगे तो इट नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है. लेट बी नो अबाउट द डेफिनेशन. In an isolated system, total charge is what is quantization of charge? Quantization of charge. Quantization of charge. It is total charge of a body is whole number integer of basic unit of charge. First of all, you should know what is basic unit of charge. Basic unit of charge means smallest charge in this universe, which can be assumed as charge of electron, that is 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम. दिस इज द बेसिक चार्ज. वैसे तो बेसिक चार्ज क्वार्क भी है, वो इससे भी छोटा होता है, बट उसके एग्जिस्टेंस को हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे. वी विल फॉलो लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्जेस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये कहता है कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज होल नंबर इंटीजर ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जी?
तो टोटल चार्ज जो होगा दैट इज Q इज इक्वल टू NE. व्हाट इज N? वेयर N इज whole number integer. It may be 0, 1, 2, 3 and 4. It never be in the form of decimal, it never be in the form of ratio. What is E? E is the electronic charge, which I already written here, that is 1.6 10 raised to minus 19 coulomb. Now, how many electrons will have a total charge 1 coulomb? You should calculate the number of electron. From the previous formula, I can write N is equal to total charge upon E. What is total charge? That is 1 coulomb. What is E? That will be 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. When you solve it, it will be 6.28 10 raised to power 18 electrons. One more question let me solve. Calculate the charge on alpha particle. What is basically alpha particle? That is the isotope of helium. When problem is asked in the form of isotope, then charge can be written as Ze. Z is here effective nuclear charge, which is called number of protons. So in this particular, what is Z? Z is 2. That's why total charge can be calculated by Ze, and finally it will be 2 into 1.6 10 raised to power minus 19, and finally it will be 3.2 10 raised to power minus 19 coulomb. This much charge is consist by the alpha particle. Let's see another property, that is conservation of charge. Conservation means which cannot be created or destroyed, total thing is constant. It means in an isolated system total charge is remains. What is isolated system? Let me discuss about it. So isolated system means any system, inside that system external agency of force is taken as 0. That kind of the system is called isolated system. Isolated system. So in this isolated system, when you put total charge, it will remain conserved. Let me explain with the help of example. We have a glass rod here, and another we have a silk cloth. When you rub them together, charge before rubbing, I can write charge before rubbing, that will be 0 coulomb, because right now it is at normal state, no charge is there on these two particular bodies. But after rubbing, charge after rubbing, that will be also 0 coulomb. How? Let's see. Suppose that when you rub them, after rubbing करने के बाद, सपोज दैट ग्लास रॉड ने सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इसका चार्ज हो गया +2e, और यहाँ पे जो है एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका चार्ज हो गया -2e. तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज विल बी +2e, बिकॉज charge is a scalar quantity, it can be added or subtracted by simple algebra. 2e, and that will be 0 coulomb. It means before rubbing these two particular objects you get charge 0 coulomb, after rubbing you get charge 0 coulomb. तो इस तरह से हम जो है इस एग्जांपल के थ्रू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझ सकते हैं. Let me see addition of charge. As charge is a scalar quantity, therefore it can be added or subtracted by simple algebra. कैसे? Let's see. Suppose that we have number of charges. Q1 अपने पास -2e है, and Q2 हमारे पास है +3, and Q3 अपने पास है 80. How do you calculate the total charge? That is the simple sum of all the charge is Q1 plus Q2 plus Q3, and finally when you calculate 2e plus 3 plus 80, and it will be 9e. So what is the total charge? 9e. But how do you get the total charge? It can be attained with the help of simple addition or subtraction. क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर अलजेब्रा हम इसमें यूज करते हैं. ओके, वन मोर प्रॉपर्टी विच आई ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज. तो ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है. इसका मीनिंग होता है जो चार्ज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड.
charge is independent of स्पीड। मीन्स टू से अगर चार्ज की स्पीड बढ़ाएंगे तो उसके चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हेन यू कंसीडर अबाउट द मास, मास विल बी वेरिएंस, बट mass m is equal to, this is popular equation of Einstein, mass energy equivalence, that is 1 minus v square upon c square. It means mass तो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, बट एज सच चार्ज की कोई इस तरह की रिलेटिव इक्वेशन नहीं होती है, इसलिए चार्ज हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा।